Hello everyone, welcome to Stats Made Simple। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था आर में बेसिक प्लॉट्स कैसे क्रिएट करने हैं, वाई प्लॉट, हिस्टोग्राम एंड लाइन प्लॉट। बट इन टुडेज वीडियो we will learn theory behind bar plot, histogram, scatter plot and line chart। हमें ये प्लॉट कब यूज करने चाहिए, कब ये प्लॉट यूज किए जाते हैं, इनके पीछे क्या थ्योरी है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। मैं आप सब लोगों को एक एक एग्जांपल भी प्रोवाइड करूंगी। वो डेटा सेट आप लेके आप आर स्टूडियो में ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करने के बाद में आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको सही प्लॉट रिसीव हुआ और नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। In today's world, screen world, researchers don't want to look data itself। जो आजकल का जो मॉडर्न टाइम है, आजकल का जो कंप्यूटराइज टाइम है, उसमें कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि हमें किसी भी तरीके का कुछ भी डेटा को देख के यूज करना पड़े। वो चाहते हैं कि हमें एक प्लॉट या विजुअलाइजेशन या कुछ ऐसी इमेज प्रोवाइड कर दे जिसके थ्रू हम देख सके कि ये डेटा क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, और ये किस टाइप की ट्रेंड को शो कर रहा है, किस टाइप की कैटेगराइजेशन को शो कर रहा है, कौन सी कैटेगरी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, और ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन होती है वो दो तरीके के डेटा सेट के लिए होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमारे पास कौन सा डेटा होता है? कैटेगोरिकल। और क्वांटिटेटिव में हमारे पास कौन सा डेटा होता है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डेटा मीन्स जो डेसिमल्स में हो और डिजिट्स में हो, ये हमारा न्यूमेरिकल डेटा है। कैटेगरिकल डेटा लाइक कि वो कैटेगरीज में हो, लाइक उसका जैसे वो किसी का जेंडर है, वो मेल और फीमेल है। लाइक अगर हम किसी को दिखेंगे कि इसकी क्या आइडेंटिटी है, इंडियन है, रशियन है, इट्स एक्सेट्रा इन दिस वे। बार प्लॉट क्या होता है? बार प्लॉट यूज होता है कंपेयर करने के लिए क्वांटिटीज को और डिफरेंट कैटेगरीज विद रेक्टेंगुलर बार। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस वाले प्लॉट में थ्री कैटेगरीज है, ग्रीन, ब्लू और रेड। इन थ्री कैटेगरीज को हमें यहाँ पे कंपेयर किया है। यहाँ पे भी हमने कैटेगरीज को कंपेयर किया है, बट ये हॉरिजॉन्टल बार हो गया, यहाँ पे ये वर्टिकल बार है। ये स्टैक बार प्लॉट हो गया, ये ओवरलैप टू एडजस्टेंट बार प्लॉट हो गए। इसमें ग्रेड शो की हुई है, इसमें कलर शो किए हुए हैं। जितना लंबा बार जा रहा है वो उसकी उतनी ही वैल्यूज को शो कर रहा है। इस कैटेगरी में कितनी वैल्यू है? ग्रीन में 20 वैल्यूज है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ग्रीन में 20 वैल्यू है, ब्लू में 15 वैल्यू है, और रेड में 10 वैल्यूज है। इधर सिमिलरली रेड में 10, ब्लू में 15, ग्रीन में 20। इस तरीके से सारे प्लॉट हम डिफाइन कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है बार प्लॉट? बार प्लॉट वर्क करता है कि आपको कैटेगरी पे जो उसकी वैल्यूज, बार की जितनी भी हाइट और लेंथ होगी वो उसकी वैल्यूज को शो करेगी। जितना लंबा बार होएगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू, उस कैटेगरी की वैल्यू होएगी, मीन्स वो ज्यादा वैल्यू शो करेगा। हमें ये कब यूज करना है? जब हमें सेल्स में के हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की सेल में कंपैरिजन करना है, हमें स्टूडेंट्स के मार्क में कंपैरिजन करना है, हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स में कंपैरिजन करना है, और हमें सर्वे रिजल्ट्स में कंपैरिजन करना है। आप देख सकते हो कि इस प्लॉट को देख के आप सारा आइडिया निकाल सकते हो कि डेटा किसके
किसके लिए है, इसलिए बार प्लॉट को यूज करना इजी होता है। ये आपका एग्जाम्पल डेटा सेट है, जिसको आप आर में पुट करिए और पुट करके उसका प्लॉट जनरेट करिए। जो भी इश्यू आएगा आप मुझे बताइए, हम वो देखेंगे। ये डिस्क्रीट कैटेगरी है, ये आपके पास कैटेगरीज है A, B, C, D, E. ये value है 5, 7, 3, 8, 6. Yes. In the last video, we haven't discussed about the naming of the bars. So naming for the naming of the bars, what you can use names dot argument. With this key, you can name the bar in the bar plot. Okay. Now let's move ahead. Histogram. Histogram is used to show continuous numerical data by grouping their values into an interval. See, this is the example. Here class 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60. And 20 to 6, 26 says 20 to 30, 10, 30 to 40, 18, 40 to 58, and 50 to 65. Here in this bar, in this here, you can see 10 to 20 values have 6 values. 20 to 30 has 10. 30 to 30 to 40, 18. 40 to 50, 8. 50 to 60, 5. And 60 to 70 is also 5. In this way, histogram created. And here one line of plot is also created. One line plot also created based upon the midpoint of these bars. Midpoint of this bar. These midpoint of the bars are connected. These are known as the midpoint. This shows you the distribution. Histogram will show you some distribution. Which distribution is will tell you how this numerical data represent in which type of distribution. So this will use as a group data set. Bar overlap with each other for the continuous data set. Height of bar represent frequency. Then you can use when you want to see exam score distribution is distribution income analysis. And you want to see what is the distribution of your data set. When we discuss about the distribution, this is the normal distribution. This is the left skew and this is the right skew distribution. This is the right skew and this is the left skew. This is right skew. This is left skew and this is normal distribution. This type of pattern we can see from this type of data set. This is the example data set. Try this data set into the R and see how your histogram created. Make sure no gaps between your bars. Data set is a continuous data set and see what type of distribution it follows. Now, scatter plot. When we want to see relationship between two numerical values using points, then we use the scatter plot. Here you can see x
x and y. It is a line, perfect positive line. It is a perfect negative line. It is a low degree positive correlation. It is a low degree of negative. No correlation, no correlation, negative correlation, and positive correlation. What they are trying to saying here, what I'm trying to tell you here, scatter plot is used for two variables x and y. Here, some points are scattered. When some points are, you will have some values for x and y. There some idea you will get. When you will get the idea, and plot those variables together, then you will see a pattern. What type of pattern you are achieving? You are achieving a straight line. You are achieving a straight line in upward direction, straight line in a downward direction, and no pattern. If you are having the straight line in upward direction, then it is a positive relation. And if you are having the downward straight line, then it is a negative correlation. Correlation means relationship between two variables x and y. Scatter plot can tell you this type of relationship. Basically, when it is used, when you want to compare height and weight, advertising versus sales analysis, scientific experiments, and you want to identify pattern or trends, then you can use scatter plot. It will show you the correlation value, and correlation will if you are getting the correlated value +1, then it is a highly positive. If -1, then highly negative. In this type of we get the correlation value from the scatter plot. पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होएगा वैसे वैसे वाई इंक्रीज होएगा लाइक दिस जैसे ये एक्स इंक्रीज हुआ वाई इंक्रीज ये एक्स इंक्रीज हुआ वाई इंक्रीज हो एक्स इंक्रीज हुआ वाई इंक्रीज हो एक्स इंक्रीज हुआ वाई इंक्रीज हो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन अगर एक्स इंक्रीज होएगा वाई डिक्रीज होएगा तो वो हो गया नेगेटिव कोरिलेशन और कोई रैंडम पैटर्न है कोई भी पैटर्न नहीं शो हुआ तो वो आपका है कोई कोरिलेशन नहीं नो कोरिलेशन example data set try to create a scatter plot by using the plot function. Line plot also we have discussed. When we have scatter plots points, then we connect those points from by using a line. So those lines tell us trends over time. See here, 2 points on x-axis, on y-axis. Let's see this is the monthly cell growth. First month की cell है 10,000. Second month की है 40. And third month की है 50. Fourth month की है 20. Fifth month की है 10. And 6 months की again होगी 40. So it is showing it increasing and decreasing pattern. Firstly, it was increasing, then it decreased, then it increased. It shows like cycle pattern. First month ये increase हुआ, second month increase हुआ, third month decrease हुआ, fourth month decrease हो गया, fifth month decrease हुआ, then 6 months फिर increase हो गया. After this, 6 months के बाद में ये फिर increase हो गया, फिर stable होएगा, फिर ये वापस downward हो. तो एक cycle show करेगा.
It means from the line flow, you can see a pattern. Points are plotted on axis, line connect point in order, and shows increase and decrease over time. Best for trend analysis. Best for trend analysis to track changes and useful continuous statistics. This is the example data set. Use and tell me what type of line you are getting. Best for when we have time series data set. Time series data set. Time series data set is a big thing in today's time. It is for stock market. Time series data is used in stock market. So it is a very useful thing right now to see patterns, how the things are going on. Time series data is a vast topic we will discuss in coming lectures. By using these things, you can see patterns and can compare multiple lines.